Sure. So good evening to everyone. So let us firstly revise once the atomic physics. Okay. See, in this one first, we'll try to start about Bohr's postulates. For single electron system. Okay. So what is the first postulate, Veda? Every atom revolves around the nucleus in the circular path, isn't it? What is the first postulate? Every electron, अगर मान के चलो, this is your nucleus. इसके अतराफ electron will be revolving in the circular orbit, isn't it? And the distance of this one from here to here is nothing but a radius of your nth orbit. For the Bose postulates, beta, every electron, अगर यहाँ पर हम लोग electron ले रहे हैं, this electron revolves in the circular orbit. Okay. Now tell me what is the force responsible for this electron to move in the circular orbit? Centripetal force. तो इसकी velocity जो आएगी, that is the velocity of your nth orbit, isn't it? So you know that the electrostatic force between the nucleus and electron is given by the formula F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. So that I can write here, electrostatic force will be equal to your centripetal force. Electrostatic force मतलब कितना हो जाएगा बेटा? K into your Z into E और E, तो Z is Z square divided by radius of nth orbit, that is Rn square, must be equal to your centripetal force M into Vn square divided by your Rn. I hope you're clear with this one. तो यहाँ से ये वाला एक और ये वाला एक cancel हो जाएगा, isn't it? So if these two are cancelling right now, I'll be getting the relation between radius of nth orbit in terms of velocity of your nth orbit. This was about your first postulate. So what is the first postulate given by the Bohr is that every electron revolves in the circular orbit. The force responsible for it to move in the circular orbit is centripetal force. So electrostatic force was been balancing your centripetal force. Electrostatic force मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1 by 4 pi epsilon naught, यानी that value I'm taking it as of your K. K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K is equals to 1 by 4 pi into your epsilon naught, that is 9 into 10 to the power of 9. Electrostatics में आपने पढ़ा ही होगा basically, isn't it? Sure. Now if I'm going for second postulate. Second postulate. What is the Bohr's second postulate बेटा? IP में आपने पढ़ा होगा. Bohr's quantization. Bohr's quantization मतलब क्या? What do you mean by the Bohr's quantization बेटा? Quantization of an orbit मतलब angular momentum is always equals to constant. That is L is equals to your n into h divided by your 2 pi, where n value is equals to 1, 2, 3, go on like this. And L value is equal to how much beta? mv into r will be equal to n into h divided by your 2 pi. Clear? Am I clear? Angular momentum is always quantized. That means n is always equal to 1, 2, but it never exists in the half or 1 by 4 or 1 by 3 like that. So it is right now mv into r will be equal to your n into your h divided by your 2 pi. Am I clear with this one? Second postulate? Sure. Firstly, third postulate. So what is the third postulate of the Bohr's model beta?
Anyone? Third postulate. ये सारे पार्टिसिपेंट्स है। विश्वास जाकिर बोलो बेटा, थर्ड postulate क्या था? Release of energy only ना? Release of energy, isn't it? That means whenever an electron is jumping from one orbit to another orbit, मान के चलो ये n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट है, और यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो here I am having an electron E. Whenever an electron is jumping from your higher orbit to lower orbit, as isn't it? It releases certain amount of energy in the form of your photon, that is nothing but lambda. Okay? So that energy, if I am writing right now, it is coming from higher orbit to lower orbit. Energy will be equal to hc divided by lambda is equals to your energy in the nth orbit minus energy in the first orbit. hc by your lambda. Clear? Or else I can write this one, h into your frequency f is equals to your E2 minus of E1 will give respect directly. F is nothing but frequency, that is E2 minus of your E1. Clear? Yes, sir. This is the second postulate and this is your third postulate. Then, sure. Next one. Bohr's model. First one is radius of nth orbit. Radius of nth orbit. इजी टॉपिक है बेटा, लेकिन थोड़े चीजें इसमें बाय हार्ट करने की होती हैं, इनको डिराइव करने के बाद भी अपने को फाइनल रिलेशन में याद रखना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Like radius of an nth orbit, I can calculate by the formula Rn is equals to, this is your n square h square divided by, this one is 4 into your pi square k into z into e square into your n. Okay? So from this one I can say that radius of nth orbit is inversely proportional to the mass. लिख सकता हूँ यहाँ पर, बाकी का सब constant है बेटा, isn't it? And I can say that ये जो constant values है इसके अंदर, इसको अगर मैं simplify कर रहा हूँ, यानी जैसे h square की value है, 4 pi square की value है, k की value है, then right now for me z square value है, ये पूरे values अगर मैं constant values को simplify कर रहा हूँ basically, so we'll be getting this one as radius of your nth orbit is proportional to the mass of the electron, or else that will be equal to, अगर constants values डाल रहे हो Planck's constants वगैरह, this comes out for me 0.529. And approximately we'll take it as 0.53. It is n square divided by z, isn't it? And unit will be the angstroms. Radius of your nth orbit will be equal to 0.53. 29 को 53 ले सकता हूँ बेटा, n square divided by your z. Very important formula. Done. So radius of nth orbit में Rn is inversely proportional to the mass, directly proportional to the n square, and inversely proportional to the z. Z क्या होता है बेटा? Atomic number. Z is your atomic number. ठीक है? Sure. Next one. Velocity of your nth orbit. Velocity of nth orbit of an electron revolving around the nucleus in the Bose model. So it is given by the formula Vn is equals to 2 pi k. K की वैल्यू लिखा मैंने ऐसे बोले, z into e square divided by n into h. Okay, this value is approximately, अगर मैं लिख रहा हूँ basically, this value comes out for me 0.53 into, this is atomic number divided by z into your n square. Done. रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट हो गया 0.53 ले रहा हूँ, सॉरी ये वैल्यू अपन की
approximately velocity of light होती है, n square तो उसके लिए हो गया ना, तो 2 pi into k into z is directly proportional to your z, inversely proportional to your n. So I can write here from this one, velocity of your nth orbit is directly proportional to the z and inversely proportional to your n. बाकी का पूरा constant है, isn't it? And unit for this one is meter per second. So velocity of the orbit in nth will be equal to, अगर simplify कर रहा हूँ, that comes out for me c by 137 times of z divided by n. किस किस की वैल्यू, 2 की वैल्यू, pi की वैल्यू, k की वैल्यू, h की वैल्यू अगर मैं डाल के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, given the charge of an electron, we are getting the velocity of the nth orbit of an electron revolving around the nucleus. This can be calculated with the formula Vn is equals to c by 137 times of your z by your n. Am I clear बेटा? Yes, sir. c by 137 को और सिंप्लीफाई करके लिख दिए तो कितना आता है बेटा, 2.18 अप्रोक्सीमेटली into 10 to the power of 6 z divided by n. क्योंकि c की वैल्यू मालूम है अपने को 3 into 10 to the power of 8. What is c? is speed of light. z is atomic number, n is nothing but orbit, isn't it? अगर c की भी वैल्यू डाल के 137 से मल्टी डिवाइड कर रहा हूं तो विल बी गेटिंग 2.18 into 10 to the power of 6 z divided by n. चल थर्ड वन, angular frequency. When electron is revolving in the circular orbit, so it has an angular frequency, time period, Bohr's magneton, current, magnetic field वगैरह सब create होते चले जाएगा. So that is given by the formula omega n is equals to velocity of nth orbit divided by radius of nth orbit. यानी vn और rn को exactly अपनी याद रखना है बेटा, कभी कभी relations के बारे में पूछ लेता नहीं यहाँ पर, isn't it? अगर मैं simplify करके लिख रहा हूँ, so omega n is directly proportional to, this will be equal to z square divided by your n cube. Very important, unit is radians per second. इसके ऊपर ये रिलेशन पे ज्यादा कंसंट्रेशन करिएगा बेटा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आ रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर आ रहा. डन. उसी तरह से टाइम पीरियड निकाल दीजिए इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद है किसी को? टाइम पीरियड का फॉर्मूला t of your nth period will be equal to 2 pi divided by omega of your nth orbit, isn't it? And I can say that this time period of nth orbit is proportional to your, this will be equal to n cube and inversely proportional to z square. Unit is nothing but for me second. Very important for the relation, but the time period is inversely proportional to z square and directly proportional to your n cube. Something which is really very important in this complete chapter is energy. Energy in the nth orbit. By default आपको याद रखना बेटा, energy in nth orbit. Energy in the nth orbit. देखो, energy in the nth orbit is nothing but sum of your kinetic energy in the nth orbit plus potential energy in the nth orbit, isn't it? और इसका standard formula है energy of nth orbit is equals to minus of your, this in terms of minus k z into e square divided by 2 times of radius of your nth orbit. ठीक है? So this is the energy of your nth orbit. Constants की value डाल के अगर मैं simplify कर रहा हूँ, we get the answer as En is equals to nth orbit के लिए minus 13.6 into z square divided by n square. Unit is electron volt. 1 electron volt is equals to how many joules बेटा? 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. यानी 1 joule will be equal to 1 electron volt divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19. Done. Am I clear? Very important formula बेटा. Energy in the nth orbit is equals to minus 13.6 into z square divided by n square, and it is sum of the potential energy plus kinetic energy. Time period of nth orbit is directly proportional to n cube and inversely proportional to z square. Angular frequency is equals to ratio of your Vn divided by Rn, are directly proportional to z square and inversely proportional to n cube. Velocity of your nth orbit is right now c by 137 divided by z by n, or it is 2.18 into 10 to the power of 6 z divided by your n. Isn't it? So I can write here velocity of nth orbit is directly proportional to z divided by n. Done.
So next one देखो, very important बेटा. Energy level of your hydrogen type atom, Na, for one electron system. Okay. Energy of nth orbit का फॉर्मूला क्या बेटा? En is equals to minus 13.6 into Z square divided by N square. Unit is electron volt. हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब Z की वैल्यू तो 1 हो गई, जैसे जैसे N की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एनर्जी इन nth ऑर्बिट विल आल्सो बी चेंजिंग. तो अगर मैं इसके डायग्राम ले रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, देन फॉर सेकंड ऑर्बिट, then for third orbit, then this is for n is equals to 1, this is for n is equals to 2, this is for n is equals to 3, then for n is equals to 4, then n is equals to 5, so on up to infinity. चलो अब इसका आंसर बताइए आप. अगर n is equals to 1 ले रहा हूं, एनर्जी क्या होती है याद है आप लोगों को? एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बात कर रहा हूं बेटा. This will be equal to minus 13.6 into Z square electron volt. Okay. Next one is minus 3.4 into Z square electron volt. Next one is 1.51 Z square electron volt. Unit will be your electron volt. Next one is 0.852 Z square electron volt. And n is equal to 5 के लिए 0.54 into Z square. एटलीस्ट 5 तक तो आपको बाय हार्ट रखना है बेटा. एटलीस्ट 5 तक तो आपको बाय हार्ट रखना है बेसिकली, सो दैट इट विल रिड्यूस योर टाइम फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. आई होप यू गॉट इट. सो एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट, z n की वैल्यू आप डालते जाइए. अगर n की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 13.6 into z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n is 1 स्क्वायर. उसी तरह से 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर तक डाल दीजिए. दिस विल बी द आंसर्स फॉर दैट. Am I clear? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन. Excitation of atom. Excitation of atom. Excitation of your atom. इसका मतलब क्या बेटा? अगर एक इलेक्ट्रॉन is observing any energy बेटा and is going from n1 to n2, then the energy observed must be exactly equal to your difference of that one. बात समझ में आ रही है? मान के चलो अगर मेरे पास n is equals to 1 से n is equals to 3 को जा रहे हैं, तो E3 minus E1, तो कितनी एनर्जी रहेगी so that it can absorb it and go it from the lower orbit to your higher orbit.
चलो, टेल मी व्हाट यू मीन बाय एक्साइटेशन ऑफ एन एटम बेटा। कब एक्साइट होते हैं बेटा अपन जनरली, फिजिकली भी बोला कब एक्साइट होते हैं? व्हेन वी सर्टेन व्हाट यू कॉल ऑब्जर्व सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा मान के चलो किसी को सीट आ गई, अगर अपने को सीट आ गई तो वी फील सर्टेन सॉर्ट ऑफ एनर्जी ना। तो एक्साइट मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करना फ्रॉम द सराउंडिंग सो दैट वी कैन जंप फ्रॉम योर वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्साइटेशन। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। यानी फॉर इलेक्ट्रॉन to observe energy and excite from n1 to n2, from n1 to n2, the energy observed must be exactly equal to it is your higher energy level minus of lower energy level। जैसे मान के चलो आपको मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना है, तो आपको करना है क्या? नीट क्लियर करना है क्या नहीं? तो अगर आप अपना नीट क्लियर करोगे देन यू कैन एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेजेस, यू कैन एंटर इनटू द कॉलेजेस ऑफ द मेडिकल गेट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करोगे डिपेंडिंग अपॉन योर रैंकिंग। तो उसके लिए करना क्या है बेसिकली? यू नीड टू ऑब्जर्व द नॉलेज ऑफ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, एक लेवल पे अपना प्रिपरेशन बढ़ाना है। then that information whatever you are getting it you write it your NEET examination and enter into the medical college। तो वही तरह यहाँ पर जैसा आप उनको एक्साइटेशन होती है, जैसे एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, यानी नीट कॉलेज में जब जा रहे हैं, जैसे आपको सीट आ गई, यू गेट एक्साइटेड, यू फील हैप्पी, isn't it? वो किसकी वजह से? बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन टू ऑब्जर्व द एनर्जी एंड इट नीड टू एक्साइट फ्रॉम n1 to n2, यानी लोअर ऑर्बिट से लेकर हायर ऑर्बिट को जाना है, तो इट नीड टू ऑब्जर्व सर्टेन अमाउंट ऑफ योर एनर्जी। So for an electron to observe your energy, for an electron to observe the energy and excite from n1 to n2, the energy observed must be exactly equal to difference of their energy levels. ठीक है ना? So what it is doing? It is observing the energy, then it is exciting from your n1 to your n2. So this energy observed must be exactly equal to En2 minus of your En1. I hope I am clear with this one. यस सर। चलो मान के चलो एक एग्जांपल दीजिए। मान के चलो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन n is equals to 1 के पास है और मुझे जाना है n is equals to 3 के पास, ठीक है ना? अब n is equals to 1 मतलब मेरे पास कितनी एनर्जी है? मतलब बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू में 1 ले रहा हूं, तो n is equals to 1 के पास मेरे पास एनर्जी कितनी है बताओ? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यस सर। Isn't it? इतनी एनर्जी मेरे पास ग्राउंड स्टेट पे है, लेकिन मुझे जाना कहां पर है? I need to go into the n is equals to 3। n is equals to 3 के पास एनर्जी कितनी है बड़े? यहाँ पर देखो n is equals to 3 के पास एनर्जी 1.52 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्लियर? यस सर। तो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए? यानी आई एम गोइंग फ्रॉम राइट नाउ हायर एनर्जी लेवल को जा रहा हूं, सो देयरफॉर इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? E3 माइनस ऑफ E1। E3 माइनस E1 कितना आ रहा है? minus 1.51 minus this is minus 13.6, यानी this is 51 plus 13.6। obviously your answer will be in terms of positive, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है बेसिकली that will come out Fermi, और how much Fermi कितना आ रहा है देखिए? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी थी आपको याद रखना। यानी n is equals to 1 से n is equals to 3 को जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। So this much energy must be observed. Isn't clear? So I can say that 12.09 electron volt of energy, must be observed. Am I clear with this one? यस सर। चलो एक्साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत आपको क्लियरली याद रखना है। डिपेंड करता है, देखो अभी इसी मैंने 1 से 2 गया, 1 से 4 जा रहे हो, 1 से 3 से जा रहे हो, कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है फिर निकालने का तरीका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। यस सर। नेक्स्ट वन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ योर एमिटेड रेडिएशन, जब जंप कर रहा है
फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जो वेवलेंथ से एमिट करेगा उसका वेवलेंथ निकालना है। ये केमिस्ट्री में भी आपको बहुत बार आ चुका है, वेरी फेमस, isn't it? Energy of an electron when it is jumping from one orbit to the another orbit. मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ and I am going to this orbit right now. यानी n is equals to n2 के पास हूँ, I need to come to the n1, isn't it? And electron is in which orbit right now बेटा? Higher energy level पे, यहाँ पर there is nothing but E minus. तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्बिट को आ रहा है, यहाँ पर जंप कर रहा है and it is liberating certain amount of energy that is nothing but lambda. Am I clear? तो hc divided by your lambda will be equal to difference of the energy level beta, that is nothing but E2 minus of your E1. होता है ना? Am I clear? Yes, sir. अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो विल बी गेटिंग द फॉर्मूला 1 by lambda is equals to r into z square into this is 1 by n1 square minus 1 by n2 square, यानी lower energy level to the higher energy level. So this is the formula 1 by lambda is equals to your r into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. R is known as Rydberg's constant और इसकी वैल्यू होती है approximately 10 to the power of 7 meter inverse. Very important beta. This R is known as what beta? Rydberg's constant. Rydberg's constant. कभी कभी directly theoretical question पूछ जाएगा, R की वैल्यू बताओ, 10 power 7 meter inverse, centimeter inverse, mm inverse वगैरह में conversion में पूछा तो please try to write this answer basically. तो basic standard formula क्या होगा यहाँ पर आपको याद रखने के लिए? 1 by lambda is equals to 1 by lambda is equals to your how much for me? R into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Am I clear with this one? ठीक है? चलिए छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए बेटा इसके अंदर। वेवलेंथ निकालने का तरीका लैम्बडा इज इक्वल ऑलरेडी आपको आता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ 12400 divided by energy delta E, isn't it? And this should be always in the electron volt and the answer will come in terms of your angstroms. ठीक है? या इसका ऐसा भी फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1240 divided by delta E is in your electron volt and this is in your nanometers. ठीक है ना? ये एनर्जी निकालने का तरीका डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आप ले लीजिए एंगस्ट्रॉम में एंड यूनिट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा, थोड़ा नैनोमीटर्स में याद रख लीजिए एंड इन टर्म्स ऑफ योर मीटर्स, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैं क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, relation between energies beta, total energy minus of total energy is always equals to your kinetic energy and that is equals to your minus of your potential energy divided by relation between total energy, kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is negative of potential and total energy, or kinetic energy is negative of half of your potential energy. Is it clear? सर हाँ बेटा। वो लास्ट इक्वेशन में डेल्टा ई है सर, वो कहाँ बेटा? डेल्टा ई है बेटा। ठीक है। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 नैनोमीटर में हो जाएगा, 12400 आ गया तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम्स में आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला जो होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम्स और एनर्जी का यूनिट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 by लैम्बडा क्या होता है बेटा, किसी को याद है? 1 by लैम्बडा इज आल्सो कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर वेव नंबर। चलिए नेक्स्ट, number of spectral lines, number of your spectral lines,
number of your spectral lines. So what do you mean by number of spectral lines, beta? All the possible number of photons energies which can emit due to de-excitation of electron from one orbit to another orbit, and higher से lower को जब नीचे आ रहे हैं, तो whatever the number of photons energy can be emitted that by during the de-excitation of electron is called as of your spectral line emission. So I can say here right now in simple language अगर मैं लिखता हूँ possible number of photons or photon energies emitted due to de-excitation of electron from where, beta? N is equals to N2 to N is equals to 1, यानी हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट तक. इसका फॉर्मूला बन गया Nc2 will be equal to your N into N minus 1 divided by 2. Clear? Just write this one. इसको हम लोग कैपिटल लिख ले सकते हैं बेटा. Number of spectral lines emitted will be equal to your N into N minus 1 divided by your 2. Done? इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा. Don't bother about that one. Next one is spectrum of hydrogen atom. Spectrum of hydrogen atom. Spectrum of your hydrogen atom. याद होगा सभी को? Series याद है बेटा? From jumping from your 2 to 1, that is known as what series beta? Lyman series. This one is your Lyman series. Lyman series lies in which region beta? Ultraviolet. मतलब कहां से आ रहे हो? N1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और N2 की वैल्यू will be greater than or equal to 2. देख सकते हो ऐसा? Next one is your Balmer series. Next one is your Balmer series. This lies in your visible region. और यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 और N2 की वैल्यू will be greater than or equal to 3. Next one is your Passion series. Third one is your Passion series and it lies in your infrared region. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 is equals to 3 and N2 will be greater than or equal to 4. Then fourth one is your bracket series. And this lies again in your infrared regions. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? N1 is equals to 4 and N2 will be greater than or equal to 5. And fifth one is your fund series. Fund series and it also lies in your infrared region. यानी N1 is equals to 5 से लेके N2 will be greater than or equal to your 6. Done? Lyman series का जो wavelength range होता है बेटा, this one as per NCERT अगर मैं लिख रहा हूँ, this one will be your 91 nanometers to your 122 nanometers wavelength का range. Done? Balmer series का range will be 365 nanometers to your 656 nanometers. Passion series का 820 nanometers to your 1875 nanometers. Done? उसी तरह से रेंज चलते रहेगा बट इतने एनसीईआरटी में दे रखा है तो इस वैल्यूज को आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिए. Balmer series किस रीजन में लाई करेगा? That is important for me. Balmer series lies in the visible region. Very peculiar है. That is the reason you need to remember this one. क्लियर? अगर ये आप सीरीज में याद रखोगे तो ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ये हो गया ऑर्बिट्स इस तरह से रफली बता रहा हूं मैं. अगर आप 2 से 1 को आ रहे हो इस तरह से या 3 से 1 को आ रहे हो या यहां से यहां तक आ रहे हो
और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ सीरीज बेटा, लाइमन सीरीज। मान के चलो n is equals to 1 है ये, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5, ठीक है ना। From jumping from your 3 and 2 is equals to 3 or greater than, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, this one is called as what beta for me, Palmer series. Palmer series lies in which region beta, visible region. उसी तरह से if I'm coming from your distributes, isn't it, from where right now 4 and 2 is equals to your 4 से लेके 3 को आ रहा हूँ या यहाँ से यहाँ तक, so this will be equal to your Paschen series. Okay, now if I'm coming from your here higher orbit step इसके ऊपर से Paschen के बाद this will be equal to your bracket, वैसा कुछ आते चलेंगे। Am I clear with this one? ये देख लीजिए, फर्स्ट एक्साइटेशन कौन बताएगा, देखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्टेड है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज बेटा। वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी डिवाइडेड बाय योर चार्ज, isn't it? This is energy divided by charge, charge of electron लिख सकता हूं मैं। So for the first excitation, isn't it, first excitation potential अगर बोल रहा हूं तो यानी this value will be equal to V1 is equals to your energy levels E2 minus E1 divided by your E, divided by E. Am I clear? V1 is equals to your E2 minus E1 divided by your E. Ionization potential मतलब क्या बेटा, ionization potential, ionization potential, फर्स्ट एक्साइटेशन सेकंड एक्साइटेशन वगैरह तो लिख लोगे ना अभी राइट नाउ, isn't it? तो ionization potential अगर बोल रहे हैं that will be equal to your infinity, energy at infinity minus energy in the first orbit divided by the charge of electron. So that will be equal to 13.6 volt per hydrogen. आया सभी को? Am I clear? Yes. थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले से बेटा जो आपको याद रखने कंपलसरी, लाइक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल। मान के चलो दिस वाज योर न्यूक्लियस Z into E, when alpha particle was being bombarded on this one, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ये था, तो when it was being bombarded in this one, इसमें से exactly one particle was being changed its direction and deviated more than 180 degrees, exactly 180 डिग्री से deviate हुआ। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, this angle is known as of your phi, and this is an alpha particle which was been bombarded. So the number of alpha particles scattered at an alpha by the nucleus is given by the formula n of your certain angle phi is proportional to 1 by sine to the power of 4 into phi divided by 2. Inversely proportional to sine to the power of 4 phi by 2. Done. Another one is size of your nucleus. Size of nucleus, यानी distance of closest distance of approach. I can write here distance of closest approach, closest approach। यानी अगर हम लोग इसके अंदर अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें, इसका नेचर पॉजिटिव होता है, इसका भी नेचर पॉजिटिव आता है। एक पॉइंट पे आने के बाद जो है ना, दिस वन एग्जैक्टली इट विल चेंज इट्स पाथ बाय 180 डिग्रीज। So the distance at which it is exactly changing its distance by your 180 degrees, that angle is called as of your interatomic distance. ठीक है, मैं रफली अगर आपको ड्रॉ करूं, so this one is your nucleus with your Z into E. When alpha particle was being incident, इसके ऊपर ऐसा एक पॉइंट पे आने के बाद exactly ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है by 180 degrees.
So the distance at which it has been completely changed its angle by 180 degrees is called as what? Interdynamic distance, that is represented by R naught. And that is given by the formula R naught is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into your 2 times of your Z into E square divided by your energy of your K, EK. This will be the formula. Done, madam? So that is 2 into Z square. Yeah, 2 into Z square. क्यों 2 बोलो? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2He4 होता है ना? Yes, sir. चार्ज विल बी इक्वल टू 2. अगर एक्चुअली और डिटेल में लिखें तो ये होता है ऐसा, AK इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught. एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, that is 1 by 4 pi epsilon naught into your this one is right now for me. एक तो हो गया न्यूक्लियस Z into E और नेक्स्ट वन इज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल्स 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R naught. ये फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है? U is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R. सेकेंड ईयर में Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला U is equals, this U is represented by EK, energy, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 मतलब ये वाला, this one is right now Q1 nucleus and Q2 is your alpha particle. This is your Q2. Q2 is nothing but 2 times the charge of electron here right now, and Q1 is equals to Z into your E. Distance is R naught. ये R naught निकाला तो ये वाला आ गया मेरे पास basically. Am I clear with this one? Yes, sir. सर ये साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है? हाँ, size of a nucleus. ओके ठीक है सर. That distance is called as what? Beta, distance of closest to approach. Done? ओके सर. ओके. सर हाँ बेटा, सर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए. ये वाला बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं सर. फोर्स के फॉर्मूले से याद नहीं आपको? देखो नहीं सर, इसके ऊपर का. हाँ तो देखो, U is equals to 1 by 4 नो pi सर. epsilon naught Q1 Q2 divided by R. सर ये फील्ड का है ना फॉर्मूला? फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं E is सर. equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. फोर्स का फॉर्मूला कितना आता? 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square. सर इसके ऊपर का बोल रहे सर. कहाँ ऊपर का बेटा? लास्ट सेकंड में. ये वाला, नहीं उसके ऊपर वाला. ये वाला. नहीं सर, मतलब अभी जो आप एक्सप्लेन करें फॉर्मूला इसमें से लास्ट थर्ड वाला आप. हाँ ये वाला. नहीं सर अभी नहीं, मतलब ये जो एटम चैप्टर का. कहाँ ऊपर? यस सर. कहाँ एक्सप्लेन किया? एक्साइटेशन पोटेंशियल. हाँ, एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे भी होता है ना, V is equals to वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. वर्क डन मतलब क्या? yes sir. एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. एनर्जी को मैं E भी लिख सकता हूँ, E बाय चार्ज. यस सर. ठीक है ना? तो दिस V is equals to एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस सर. ठीक है? यस. See this question. What is the angular momentum? What is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is minus 3.4 electron volt?
Try करिए. What is the angular momentum of an electron in the Bohr's? And energy Sir, का फॉर्मूला h क्या है by बेटा? pi. क्या बोले? Sir, h by pi. h by Pi. pi. h by pi. क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to minus 13.6 divided by n square electron volt. एनर्जी की वैल्यू दे रखी है minus 3.4, that is equals to minus 13.6 divided by n square. Isn't it? तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? n square will be equal to 13.6 divided by 3.4. So n की वैल्यू आ गई 2. Isn't it? एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो L is equals to n into h divided by 2 pi अपना फॉर्मूला है. n की वैल्यू आ गई 2 into h divided by 2 pi. This 2 will get cancelled, so answer will be equal to h by pi. Am I clear? Yes, sir. Very important model बेटा, समझने की कोशिश करो. Calculate the ratio of रेगुलर मॉडल ही आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे. Sort of revision. Calculate the ratio of minimum to maximum. Minimum to your maximum wavelengths. Maximum wavelengths of radiation that an electron possessed in Bohr's hydrogen atom. Okay, in the bracket, if the electron is de-exciting, to n is equals to 1. Ratio of minimum to maximum. यानी 1 by lambda max निकालो पहले. 1 by lambda max will be equal to your r divided by de-excitation मतलब n is equal to 1, यानी this is your 1 square. मैक्सिमा के लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो. और मिनिमा के लिए मतलब 1 by lambda minima will be equal to this is r into फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो n2 वैल्यू होगा that will be equal to infinity. डन. यानी अगर इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं मैं 1 by lambda max divided by 1 by lambda minima, that is equals to this value will become how much बेटा? ये हो गया r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square divided by your r into 1 by 1 square. This is 1 by 1 square minus 1 by infinity square. यानी ये r value और चलेगी तो लैम्बडा में ये ऊपर चले जाएगा. So this one is lambda minima divided by lambda max. That will be equal to how much बेटा? 1 minus 1 by 4 divided by 1. 3 by 2. So that will be equal to 3 by 4. बस समझ में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था अपने को. लैम्बडा मैक्स मतलब क्या हो जाएगा बेटा? n2 की वैल्यू 2. लैम्बडा मिनिमा मतलब क्या हो जाएगा? n2 की वैल्यू इंफिनिटी. बस. हमें क्लियर? इज इट क्लियर? सर आप लैम्डा मिनिमम बाय मैक्सिमम लिख दिए, मैक्सिमम बाय मिनिमम आना ना. कैसा आता बेटा? ये भाई 1 by लैम्बडा मैक्स है ना बेटा. 1 by लैम्बडा मैक्स नीचे जाएगा, लैम्बडा मिनिमा ऊपर चले जाएगा ना. हाँ हाँ ठीक है सर. ठीक है ना? हाँ ठीक. नेक्स्ट वन. This question is very important. An electron
of 24.6 electron volt. Sorry. रखो रहा है. And energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from a neutral helium atom. From a neutral helium atom. The energy in electron volt. The energy in electron volt required to remove both the electrons from a neutral helium atom is. I'm giving you the options: 79.0, 51.8, 49.2 and 38.2. Try getting. An energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from the neutral helium atom. The energy required to remove both the electrons from the neutral helium atom will be equal to how much? आया? कितनी एनर्जी बोल रहा है बेटा आपने? Energy of 24.6 electron volt is required to remove one electron. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी कितनी चाहिए? 24.6 from a neutral helium atom. Now the energy required to remove both the electrons from a neutral helium atom is how much? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे. इसकी एनर्जी कितनी है पहले? So I can say that the ionization energy of helium atom that will be equal to, अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने 13.6 into z square, यानी that is 13.6. z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2 square हीलियम एटम के लिए, यानी this is coming out for me 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम है 54.4. Now total energy needed to remove both the electrons will be equal to how much? अगर एक के लिए 24.6 है तो दो के लिए कितना हो जाएगा? So I can write here right now. So total energy needed to remove both the electrons from helium atom, from your helium atom. कितना होगा बेटा? 24.6 आप दे रहे हो, isn't it? Plus already इसके पास कितनी है? 54.4. So that must be equal to 79 electron volt. So the energy required to remove both the electron कितनी होनी चाहिए मेरे पास? 79 electron volt की अगर मेरे पास एनर्जी है, then I can remove both the electrons from the neutral helium atom. Am I clear with this one? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. Very good question. आया सभी को? Yes, सर sir. एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए ना. देखो बोल रहा क्या, देखो एनर्जी ऑफ 24 है. देखो मेरे पास है क्या है? हीलियम है. हीलियम मतलब कितना? 2, isn't it? Second atomic number.
अब मैं कितना एनर्जी दे रहा हूँ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि आई कैन रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम। दो हीलियम एटम्स के अंदर एक हीलियम एटम के निकालने के लिए मेरे पास एनर्जी कितनी दे रहा हूँ 24.6। अब वो पूछ रहा है तो अगर ये बताओ व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। यस सर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पता कर रहा हूँ कि इस हीलियम के पास हिडन एनर्जी है कितनी, उससे तो मुझे मालूम ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान के चलो आपको नीट क्रैक करना है तो आपका मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, अभी मान के चलो यू आर मेकिंग ए टारगेट ऑफ योर 530 मार्क्स, किसी हाल में भी मुझे क्रैक करना है। अगर ये आपका क्रैक करना ये आपको मालूम है तो इसके हिसाब से आप अपनी एनर्जी लगाओगे ना। चलो भाई मेरे को बायोलॉजी में इतने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतने आ रहे हैं, फिजिक्स में मुझे इतने आने चाहिए बोल के एक एनर्जी लेवल लगाओगे, ये मिनिमम आपका बैरियर है। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, हीलियम के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हिडन एनर्जी कितनी है 54.4, इतनी एनर्जी है। लेकिन अपन दे कितने रहे हैं, एक निकालने के लिए 24.6, ये 24.6 और ये 54.5 अगर दोनों में दे दूं तो दैट टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है मेरे को 79, यानी 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी अगर मेरे पास है देन आई कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं फ्रॉम द हीलियम एटम। क्लियर? सर ये आयनाइजेशन एनर्जी उस हीलियम के पास है सर। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट उसके पास रेसो एनर्जी। आयनाइज करना मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, आयनाइज करना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग आयनाइजेशन, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। रिमूव इलेक्ट्रॉन उसको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए ना, ऑलरेडी हिडन एनर्जी इसके पास कितनी है 54.4, उसको निकालने के लिए अगर मैं एक्जैक्टली अगर ये प्लस है तो माइनस 54.4 दे दूं तो पूरी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। लेकिन यस एक सर। को निकालने के लिए उसने एनर्जी कितना दे रखा है 24.6, ऑलरेडी इसके पास एनर्जी कितनी है 54.4, दोनों को ऐड कर दो तो इतनी एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंट इन द हीलियम एटम। यस सर। और एक क्वेश्चन ट्राई करिए। Energy required for the electron energy required for the electron excitation in lithium plus plus from the first
to the third Bohr orbit. बताइए कितना होगा? Giving you the options: 36.3 electron volt, 108.8 electron volt, 122.4 electron volt, and 12.1 electron volt. Energy required for electron excitation in the lithium plus plus for the first to third Bohr orbit will be equal to how much? Energy of excitation का formula क्या है बेटा? Delta E. Delta E is equals to 13.6 into your Z square. Into this will be equal to 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Isn't it? So this will be equal to your 13.6 into Z value will be equal to 3 square into this is your 1 square, and from first to third orbit yani this will be equal to 3 square. So this will be equal to 13.6 into 3 square is 9 into 1 by 1 square is 1 divided by 1 by 1 minus 1 by 9. तो देख लीजिए कितना आ रहा? कितना आ रहा बेटा? 108.8. 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कौन सा ऑप्शन? सेकंड. क्लियर? सर हाँ, यहाँ पर गैप डिफरेंस के आंसर नहीं आता सर, मतलब एनर्जी एनर्जी का ही फॉर्मूला ले रहा हूँ ना, वेव नंबर का नहीं ले रहा हूँ ना. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बोल रहा है. तो सर वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड है क्या सर? वो -13.6 हाँ, मतलब that is -1 only for your hydrogen like atom. It is your lithium plus plus है ना यहाँ पर तो. यस सर. Sir, lithium orb- plus plus B will be equal to Hydrogen like hydrogen. atom. for a hydrogen atom particularly it is that sir, मतलब -13.6 -1.5. No. What is lithium plus plus? You tell me. Li No plus sir, plus for मतलब क्या? हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का ही है ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगा ना वो. Yes, sir. no, atomic number is different no sir. हाँ, atomic number is different, but this is one electron system only ना. It is hydrogen like Yes. steel only, no, sir. हाँ, lithium plus plus, beryllium plus plus वो पूरा जो भी आ रहा है ना, they are right now for me one electron system only. Yes sir, but I am asking that मतलब energy difference is not possible for this question sir. हाँ, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर क्या बोल रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बोल रहा है ना बेटा. डी एक्साइटेशन होता तो माइनस आता. यहाँ तो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है ना, एक्साइट कर रहा है मतलब इट इज टेकिंग द एनर्जी एंड गोइंग अप. क्लियर? सर हाँ बेटा. -13.6 -1.51 करे तो आंसर नहीं आता सर. माइनस 13.6 एंड -1.51 -1.5 क्या फिर? तो थर्ड लेवल में जो एनर्जी रहती है, जो फर्स्ट लेवल में एनर्जी रहती है ना. वो तो डी एक्साइटेशन के लिए हो ना, क्वेश्चन ही चेंज हो जा रहा, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हो ना. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बोल रहा है. एक्साइटेशन मतलब क्या? यू आर गोइंग फ्रॉम योर लोअर ऑर्बिट योर हायर ऑर्बिट ना. यहां से यहां तक जब जा रहे हो बेसिकली तो ये एक्साइट हो रहा है ना. अगर ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज योर डी एक्साइटेशन. डिफरेंस क्या n आया is था सर equals आंसर? to 2 और n is equals to 1. इसके लिए एनर्जी डिफरेंस मतलब क्या लिखोगे आप? E2 minus of your E1. Yes, यस sir. सर. Isn't it? अब यहाँ पर जा रहे हैं राइट नाउ फॉर मी लोअर टू अपर, यानी यहाँ पर डिफरेंस एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? E1 minus of your E2. This one is right now absorption and this one is right now for me emission. Done? यस सर. That's all our equation का थे.
This one. An electron of a stationary hydrogen atom. Stationary hydrogen atom passes from fourth energy level to the ground state. To the ground state. Recoil velocity of the atom as a result of photon emission. As a result of photon emission is. Options are 15, HR divided by 16m, HR divided by m, 13 HR divided by 15m, and 16 HR divided by 15m. 15 HR divided by 16. Aya, Yes, sir. 15 H first option की fourth option. Sir, first option. ठीक है चलो चेक करना. तो क्या बोला? An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fourth energy level to the ground state. Recoil velocity of the atom as a result of the photon emission will be equal to how much? Very good question, बेटा. तो wavelength निकालो पहले इसकी 1 by lambda is equals to r into कौन सा ऑर्बिट 4 से लेके फर्स्ट तक, यानी this will be 1 square minus this will be 1 by 4 square. Isn't it? So कितना आ रहा? This is your r into 1 minus 1 by 4 square is 16. So LCM will be 16, 16 minus 1, 15. So this is 15r divided by 16. That is 1 by lambda. अब velocity पूछ रहा है, तो momentum of this one will be equal to m into v, and momentum will be equal to how much बेटा? h by your lambda. Isn't it? So that is equals to ये कितना आ गया? 1 by lambda की value आ गई 15 into r divided by 16 into your h. The velocity पूछ रहा है v, so v value will be equal to how much will be? 15 hr divided by 16 times of your m. This is your recoiling velocity. Done. Done, बेटा. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, again very important, good model. An electron is in an excited state. Is an excited state in a hydrogen-like atom. In a hydrogen-like atom. It has total energy of minus 3.4 electron volt. First off, the kinetic energy of the electron is E and its de Broglie wavelength. दो क्वेश्चन है बेटा, आपको एग्जामिनेशन में शायद एक ही क्वेश्चन पूछे, दो मिला के पूछ रहा हूँ. And its de Broglie wavelength is lambda. Options given are E is equals to 6.8 electron volt and wavelength is approximately 6.6 into 10 to the power of minus 10 meters. Second option is E is equals to 3.4 electron and wavelength is approximately 6.6 into 10 to the power of minus 10 meters.
Third option is E is equals to 3.4 electron volt. Lambda is equals to 6.6 into 10 to the power of minus 10 meters approximately. Done? सर सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बीच में लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? ये 14 ले लीजिए. The next one. E is equals to 6.8 electron volt and wavelength is equals to 6.6 into 10 to the power of minus 11. चलो बताइए. सर सेकंड ऑप्शन. आ रहा? यस सर. In the excited state in hydrogen like atom has a total energy. Don't give, don't share, don't share. तुम्ही शिकायचो. हाँ, पहिले वो डाल दिए. चलो. Potential energy कितना होता है बेटा? Potential energy is minus of 2 times of kinetic energy, or that is minus of 2 times of your E. तो total energy कितना हो जाएगा? Total energy is equals to minus of 2E plus of your E, and that will be equal to minus E. So it is equals to minus 3.4 EV, isn't it? अब उसने बोला क्या हुआ है? अगर total energy minus 3.4 electron volt है, then kinetic energy will be equal to how much better? Positive, isn't it? Am I clear? So kinetic energy will be equal to your plus 3.4 electron volt. और wavelength निकालने का तरीका बेटा, lambda is equals to de Broglie wavelength in terms of kinetic energy under root of your 2m into your k, isn't it? So that is equals to your h divided by under root of your 2 into your m. Kinetic energy is 3.4 electron volt. इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए. टंगस्टन की वैल्यू मालूम है, चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 3.4 electron volt. So if I am simplifying this one, I'll be getting 6.6 into 10 to the power of minus 10 meters. Done? Question number 23 बेटा. Fourth option. Okay, फोर्थ ऑप्शन सर. very good. The potential energy of an electron in the nth stationary orbit of hydrogen atom can be given by 2 times total energy. हाँ. Fourth option. Done? यस सर. Yes, sir. सभी को आया करना है. फुरकान Yes, sir. देखो करो.
सर नीचे n स्क्वायर करता हूँ। Then आ गया सभी को? सर n स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैसा है? Potential energy of an electron then the stationary orbit of the hydrogen atom can be written as Tell me Furkan कुछ प्रॉब्लम है क्या? Furkan, sir, how is the square coming in the denominator? But the energy का formula तो है ना, energy in the nth orbit will be equal to minus 13.6 divided by n square. Electron volt ये तो energy है ना for hydrogen like atom. Now potential energy will be equal to how much for me? 2 times of your En, isn't it? So that will be equal to minus 2 into 13.6. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, even it is electron volt, so this will be equal to how much for me? minus 27.2 divided by n square ही आया ना बेटा? चल डन। चल क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करिए बेटा। The radius of electron in hydrogen changes from 2.12 angstroms to 4.77 angstroms. The hydrogen atom has dash.
Question number 27. The radius of electron in hydrogen atom changes from 2.12 angstroms to 4.77 angstroms. The hydrogen atom has observed a photon of energy 1.51 and observed a photon of energy 1.89, photon of energy 10.2, a photon of energy 1.04. कितना होगा बेटा? Radius of nth orbit का फॉर्मूला लगा लीजिए because it is going from one orbit to another orbit, so that will be equal to 0.529. I'm taking it as a 53 into n square divided by z. यही फॉर्मूला है ना? Isn't it? अब it is going from which orbit बेटा? Hydrogen atom 2.1 angstrom to 4.7. हाइड्रोजन लाइक एटम यानी z की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज चेंजिंग, यानी r1 की वैल्यू 2.12 दे रखा है, isn't it? So r1 की वैल्यू दे रखा है, तो you can get the value of n1. उसी तरह से r2 की वैल्यू दे रखा है 4.7, so you can get the value of your n2. So energy will be equal to how much for me बेटा? Difference. So it will be equal to how much for me? Minus 1.5 minus of your 3.4 energy levels electron volt. 2 का 3 का. So it is 1.9 electron volts आ रहा मुझे. Therefore it can observe the photon of energy इतना है मेरे पास, यानी 1.9 तक जा रहा है, मतलब it absorbs a photon of energy how much for me? 1.89. सर n की वैल्यूज कैसा है आपको? देखो R1 की वैल्यू दे रखा है, फर्स्ट वन आपको प्रॉब्लम में कितनी दे रखा है? 2.12 ना. यस सर. So it is 2.12 is equals to, this is 0.53 into your n square. यस सर. So 2.12 divided by 0.53 is Okay, equals sir. to your n square. यस. आया? यस सर. देखो कितना आ रहा? आया 2? ये कितने में जा रहा है? यस सर. 4 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो n is 2. नहीं एग्जैक्ट में जाएगा बेटा, 2.12 डिवाइडेड बाय 0.53, यस सर. यस. तो n की वैल्यू आ जाएगी 2. उसी यस तरह सर. से R2 की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 4.77, isn't it? यानी 4.77 divided by 0.53 is equals to n2 square. This one is your n1 square. 9 आ रहा सर, तो 3. So this is 9, मतलब n2 square is 9, that means n2 will be equal to 3. आ गया? n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, यानी डेल्टा E will be equal to how much? E2 Yes. minus of your E1. एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट आपको मालूम है, एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट आपको Minus मालूम है, 2.5. मैंने बोला था अप टू 5 तक आपको बाय हार्ट करके लिखना है, उसका डिफरेंस लिख लीजिए. क्लियर? Okay sir. Yes sir. चलो एक क्वेश्चन तो भाई डिफॉल्ट आपको बन रहा है, देखिए बेटा इसमें हर पेपर में. चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए जल्दी से. कहाँ पर है? अनपोलराइजेशन, हाइड्रोजन, ग्लोबल गम्स, थ्री डायमेंशनल मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, कार, work done, magnetic flux, bar magnet, work power energy, suspension waves.
चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा. For which of the following Bohr's model is valid? Singly ionized neon atom, singly ionized helium atom, singly ionized lithium atom, singly ionized boron atom. Single option. ionized helium atom. Why not lithium? Sir, because lithium plus will be equal to helium. 2 electrons. Sir, one single electron speed. Very good. और किसी कुछ आ रहा? Bohr's model is only valid for single electron system ना बेटा. Neon के लिए तो नहीं होगा. Single ionized helium atom. This will be possible. This is not possible. This is not possible. So what is the best option I can write? Second one. Done? Yes, sir. तो आप लोग को मैं क्वेश्चन पढ़ा कहीं दिख गया तो फिर बोल देना. डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड ये वाला प्रॉब्लम अपन नहीं करेगा. 40 ट्राई करिए एक बार. The de Broglie wavelength associated with an electron moving under a potential difference of 10,000 volts will be equal to how much? The de Broglie wavelength associated with an electron. Electron के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग. Lambda is equals to 12.27 divided by root of your V. V is nothing but potential. So that is equals to 12.27 divided by under root of this will become how much will be beta? 10,000. Then Third option, sir. Third option, sir. very good. 0.01227 nanometers. आया सभी को? एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा बेटा? 0.1227 एंगस्ट्रॉम्स आएगा. Isn't this is 10 power 4 ना? Root over 10 power 4. मतलब 10 power 2. That is 0.1227 angstroms or 0.01227 nanometers. सर ये फॉर्मूले से एंगस्ट्रॉम में आता ना सर. हाँ ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में रहेगा. इसलिए ये जो फॉर्मूला रहेगा दिस वन इज इन योर एंगस्ट्रॉम्स. डन? Yes, sir. Question number 34 बताइए एक बार. The amount of work done by the gas in increasing the volume of 10 moles of an ideal gas from 1 liter to 20 liter at 0 degrees Celsius will be equal to how much? Amount of work done by the gas in increasing the volume of 10 moles of an ideal gas from 1 liter to 20 liters. कौन सा प्रोसेस है पहले ये बताइए मुझे. पहले वॉल्यूम चेंज हो रहा है. आइसोथर्मल सर. आइसोथर्मल क्योंकि 1 लीटर के पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. 20 लीटर के पास भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. सो इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? W is equals to 2.303 RT log V1. RT. This will be equal to log of your V2 divided by V1, isn't it? So that will be equal to 2.303 into number of moles कितने बेटा? 10 into R की वैल्यू होती है 8.31 into temperature is given how much for me? 0 degree Celsius यानी 273 Kelvin into this one is log of your V2 by V1. V2 की वैल्यू 20 liters है. This is 20 divided by 1, isn't it? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. That will give me the answer. log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.3. 0.3. 0.3. वेरी गुड. यानी 20 है ना फिर ये. Sir, so we can write that 2 into 10, so we can take 2. 3 ना. कौन सा आंसर है देखो.
log 20 की वैल्यू बता सकता है कोई? log 20 कैसे लिख सकते हैं बताइए बेटा? So we can write log 20 as log 2 into 10. So log 2 plus log 10, no? log 2 into your 10 ऐसे लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. यानी this will be equal to how much for me? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 3010 and log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1. यानी this value will become how much for me? 1.3010 हो जाएगी. See, log 20 is nothing but equal to log 2 plus log 10 बेटा. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ याद है आप लोग को? log of your AB. That means this is your log A plus of your log B. Clear? So log 20 की वैल्यू कितनी है? 1.3010. Am I clear? Yes, sir. चलो अब इसको कैलकुलेट करके दीजिए. लॉग का ही कैलकुलेशन मिस्टेक होता था इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया. log 20, log 30, log 40 जब भी आ रहा है तो ऐसी वैल्यू भी लिख लेना बेसिकली. क्लियर? चलो कैलकुलेट कर लीजिए बताइए कितना आ रहा है. 2.303 into 10 into 8.31 into 273. I'm using calculator. It is coming out for me 5246 into this one is 1.3010. तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. I'm getting as 67973.6 joules. यानी 68 nearby answer kilojoules. will be equal to 68 kilojoules. Third option. Clear? Done बेटा? Yes, sir. 33rd one. Air is filled in a mortar tube at 27 degrees Celsius temperature and 2 atmospheric pressure. If the tube suddenly bursts, then the final temperature of the air will be equal to how much? 1 by 2 to the power of 2 by 7 value is given as 0.82. Take air to be a diatomic gas. कौन सा प्रोसेस है भले ये बताइए? Adiabatic. एडियाबैटिक. क्या क्या रिलेशन है मेरे पास? टेम्परेचर है, प्रेशर है. टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन याद है आप लोग को? जल्दी से बताइए. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ योर टेम्परेचर ए? What is the relation between the temperature and as well as of your pressure? Relation between बताइए. T to the power of gamma divided by P to the power of 1 minus gamma is equals to constant. याद है? Sir, because temperature and pressure are given, this is adiabatic. No, it is a sudden process, na beta. So in a sudden process, Yes, the sir. change in energy will be equal to 0, na? Yes, sir. Bursting of his cycle tire tubes. This all of them are your adiabatic process. और यहाँ पर दे रखा है टेम्परेचर और योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो टेम्परेचर और प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम है. T to the power of gamma divided by P to the power of 1 minus Yes, gamma is equals to constant. तो टेम्परेचर है 27 मतलब 273 plus 27. That means this will be equal to 300. This is 300 to the power of gamma. Gamma मतलब कौन सा डायटोमिक गैस के लिए? 7/5, isn't it? Divided by pressure. Pressure कितना है? 2 atmospheric pressure. 2 to the power of 1 minus gamma. यानी 1 minus 7/5. 1 minus 7/5 कितना हो जाएगा? 2/5. That is equals to your T2 अपने को निकालना है. T2 to the power of gamma will be equal to 7/5 divided by P. P will be equal to how much for me? To atmospheric pressure. Isn't it? If the tube suddenly bursts, then the final temperature of the air will be equal to how much? Take the air to be a diatomic. Done. So P value will be equal to how much for me बेटा? 1 to the power of your 2/5. यानी T2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ. तो T2 will be equal to your 300. ये to the power of 5 ये चले गया यहाँ पर. Into your this will be equal to 1 by 2 to the power of your 2/7. आया? पावर ट्रांसफर कर लेता है इसको. Sir, 1 minus 7/5 will be minus 2/5. No? 1 minus gamma 1 minus of your gamma की वैल्यू कितनी है? 7/5 ना. Minus 2/5.
Okay, minus 2 pi. This is also minus 2 pi. So T2 कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर. So T2 will be equal to, this will be 300. This is to the power of, ऊपर चले जाएगा. This will be equal to your 1 by 2 to the power of your 2 by 5 to the power of, कितना बनेगा 5 by 7. पता है ना. And this will be equal to 300 into 1 by 2 to the power of 2 by 7. And this will be equal to 300 into 1 by 2 to the power of 2 by 7 is 0.82. So 0.82 into 300. देखो कितना आ रहा. 82 3s are 6. 6 में आ रहा मतलब सेकंड ऑप्शन 246 केल्विन तक कुछ आना चाहिए. सर एक बार फिर से कैलकुलेशन समझाइए. So this one is t to the power of gamma, that is 300 to the power of 7 by 5 divided by 2 to the power of 1 minus of your gamma. Done? Sir, why are we taking T1 as 1? यहाँ पर क्या बोला? Air is filled in an atmospheric tube at 27 degrees Celsius temperature and 2 atmospheric pressure. Isn't it? 27 degrees Celsius के पास 2 atmospheric pressure है. And it is coming from what pressure? 1 atmospheric pressure to 2 atmospheric pressure, na? Yes, And if sir. the tube is suddenly burst, yani atmospheric pressure will be equal to how much? Atmospheric pressure will be equal to 1 atmospheric pressure. Yes, sir. अंदर रह जब तक 2 था, जैसे वो burst हो गया तो it has become for me 1. Done? Yes, sir. T2 निकालना है ना अपने. तो T2 will be equal to how much work? T2 is equals to ये हो जाएगा 300 into this one is 1 by 2 to the power of, ये कितना है मेरे पास 2 by 5. पावर ट्रांसफर कर रहा हूं तो this value will become how much for me 5 by 7. And this value will become for me 300 into 1 by 2 to the power of 2 by 5 into 5 by 7. If 5 will get cancelled, so it is 1 by 2 to the power of your 2 by 7. And this will be 300 into, इसकी वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में कितना 1 by 2 to the power of 2 by 7 value is 0.82. So Yes, sir. 82 into 3 कर रहा हूँ approximately, that come out for me 246 Kelvin. Yes, sir. Area. This is something really very good question. 32 का देखिए. If AN is the area enclosed in the nth orbit in hydrogen atom, then the graph of log AN by A1 versus your log N will be equal to how much? ये थोड़ा higher mathematics level में चले जाएगा. अगर ये आ जाएगा तो this will be in the level 3 type of your question. But still you can do it out because basic log का concept अपने को idea रहता. So एक बार try करिए. If AN is the area enclosed in the nth orbit in a hydrogen atom, radius of nth orbit का formula क्या है बेटा? Rn is equals to n square into r1. Yes, sir. Take the log on both the sides बेटा. So this is your log of your, in terms of area लिख रहा हूँ तो this is An divided by A1 because area will be equal to how much for me? Pi into your r square. Isn't it? So radius area is directly proportional to your, वैसे भी r square हो जाएगा. So I am writing that directly in terms of your area. तो हो गया log of your an divided by an is equals to log of your, this will be equal to pi into your rn square divided by pi r square. ठीक है ना? a pi will get cancelled, so this will be log of your rn by r square will be equal to how much बेटा?
area enclosed by a hydrogen atom, then the graph of AN by NN versus log N. कितना बनेगा? Rn to the power of 4 है ना बेटा? N to the power of 4. This one is 4 times of your log of your N. Done. R square है ना बेटा? Log of your R square, यानी that will become for me log N power 4 or R power 4. So it will be 4 times of your log N. So it is log of your AN divided by your A1 will be equal to your 4 times of log of N. That means what will be the graph beta? It will be a straight line with a slope of, comparing with the straight line equation, because this is a graph between lesser. Graph of your यहाँ पर हो गया log of your AN by N versus log N. Is it? तो यानी y is equals to m into your x. X axis पे log n हो गया, y axis पे log of your an by n हो गया. Slope की वैल्यू कितनी आ रही? 4 के बराबर आ रही. मतलब tan theta value will be equal to 4. या theta value will be equal to tan inverse of your 4. और slope value will be equal to 4. So what is the option I can write? It will be a straight line with a slope of your 4. थोड़ा practice करो बेटा इस क्वेश्चन, आराम से निकल जाएगा. Then phase two phenomenon is known as of. Question number 30 बोली, but answer कोई बोल सकता है क्या? When two pieces of ices are pressed together to form a single block, the phenomenon is known as solidification, refrigeration, relegation, fusion. Fusion. नहीं होता. Due to pressure change, melting point lowers, and two solid ice pieces will join together. Fusion में क्या हो रहा है? Ice is converting to water. Relegation. हाँ, रेग्लिगेशन आंसर होगा. ये एक बार एनसीईआरटी रेफर करिए आप लोग. रेग्लिगेशन होगा क्योंकि दो आइस पीस को अगर आप लगड़ रहे हो तो एक पॉइंट के बाद तो स्टिक अप हो जाते हैं बेसिकली. आप देखो अभी, दैट इज बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड एज ऑफ योर रेग्लिगेशन. डन. Yes, sir. साइन अल्फा ये बात निकल लेते. ये वाला बताइए. क्वेश्चन नंबर 20. An alpha particle consists of 2 proton, 2 neutron, 2 protons only, 2 protons, 2 electrons, 2 neutrons, 2 electrons and 2 neutrons. फिर theory question है. 2 protons and 2 neutrons. Very good. Alpha particle क्या होता है? 2He4. Yes, sir. So alpha particle is nothing but what? An helium nucleus of 2He4. It has 2 protons and as well as of your 2 neutrons. Done? Yes, sir. ये वाला दिख रहा है. 15th one. Time taken by a body is 20 plus or minus 0.2 seconds. Is undergoing a displacement of 200 plus or minus 5 meters. Maximum percentage error in velocity is how much? बताइए. Time taken by a body is 20 plus or minus 0.2 seconds. Is undergoing a displacement of 200 plus or minus 5 meters. Maximum percentage error in the velocity. So maximum percentage error in the velocity मतलब v is equals to s is equals to vt. V is equals to distance divided by time. So that will be equal to how much for me? 0.2 divided by your 20 into 100 plus. Next one is 5 divided by, this one is how much for me? 200 into your 100. So कितना आ रहा है देखिए. So this will come out for me 1 plus, यहाँ से ये वाला चला गया. 5 by 2 is nothing but how much will be? 2.5. And this will be equal to 3.5%. 3.5. 3.5. 16th one भी बोल सकते हैं. Two ideal monatomic gases at temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. Masses of the molecules of the gases are M1 and M2 and number of molecules in the gases are N1 and N2. Temperature of the mixture will be equal to how much? Energy, so energy का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 by 2 times of your K. Number of moles will be equal to N1 plus N2 into common temperature T. That will be equal to your 3 by 2 times of your K into N1 into T1 plus of your N2 into your T2.
So T value will be equal to how much? 3 by 2k, 3 by 2k will get cancelled. So T will be equal to your Second option. T1 plus of your N2 T2 divided by N1 plus of your N2. Second option. Energy में बोला है ना बेटा? Energy of the molecules का formula 3 by 2 times of your KT. Done? Yes, sir. इसको masses consider नहीं करना molecule बेटा mass consider नहीं करना ये है ना बेटा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में दे रखा है ना. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर गिवन एज ऑफ योर N1 and N2. डन. okay sir चलो पार्टिकल वोल्टेज गेन. sir 20 वाला 2 electron 2 proton 2 neutrons हाँ 2 electrons 2 protons will be the answer. Question number 20 का 2 protons and 2 neutrons. First option will be the answer. The SI unit of thermal conductivity of resistivity will be equal to how much? Thermal coefficient of resistivity यानी alpha is equals to delta L divided by L into delta theta. Sir, ohm Kelvin inverse. हाँ ohm meter Kelvin inverse, ohm Kelvin inverse, Kelvin inverse. Coefficient of resistivity. Thermal coefficient of resistivity. Meter divided by meter into Kelvin. Meter gets cancelled. Kelvin inverse ही होगा ना बेटा. Yes, sir. Fourth option. Done. Yes, sir. चलो कल इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा. एटम्स के ऊपर एक बार आप पढ़ लेके आइए. So we'll try to do the some PYQs and some good questions on your atom side dual nature. ठीक है? Sir. To start with the nuclear physics. चलो. Sir, हाँ how we are getting that, sir? First last question, sir. कौन Fourth सा? option. थर्मल कंडक्टिविटी है ना. थर्मल कोएफिशिएंट मतलब क्या? अल्फा इज ना. अल्फा का फॉर्मूला याद नहीं आपको? अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू टेंपरेचर डिफरेंस. Yes, sir. Length is measured in meters. This length is also measured in meters. Temperature is measured in Kelvin. Meter will get cancelled. So 1 by Kelvin. So Kelvin to the power of -1. Ohm is the unit of resistance. Sir, alpha is also known as thermal resistivity. हाँ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल मतलब हीट ही ना बेटा. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलो या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ योर रेसिस्टिविटी बोलो, वन इन द सेम. Yes. ठीक है. टेक केयर बेटा. बाय.